social skills. Thank you for giving me opportunity, JJT University and its staffs. Hello. So thank you very much, sir. Yeah. In fact, first time in 1.5 days of the conference, I heard and watched a very nice lecture on the subject for the first time actually. It is very much related to our subject, and Yeah. this is to be expected. Your guidance as a speaker is valuable, is very much valuable. In fact, ours is a subject which is technical. You made this subject very simple. It was fantastic. You mentioned the situation related to virtual education in Ethiopia, and it was inspired us to compare education, virtual education in India, or rather than India, whole the nation, whole the world with Ethiopia also. So thank you very much. Okay. Thank you Sir, for Okay. thank you so appreciation. much, sir. It was really a very practical session, sir. Thank you so much. Yes, 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 Okay. definitely. तो Thank अभी you. हमारे साथ एक और स्पीकर है, अ, हमारे आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर विवेकानंद जैन सर। तो क्या मैं जैन सर से बात कर सकता हूँ? जैन सर है अभी? हेलो, डॉक्टर जैन सर है? ऑनलाइन है डॉक्टर जैन सर? डॉक्टर विवेकानंद जैन सर, आपकी आवाज आ नहीं रही, बिल्कुल धीरे है, मुझे समझ में नहीं आ रही सर। हाँ, ये आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ा और अच्छी आनी चाहिए सर आवाज। थोड़ी बहुत बहुत धीरे है सर। आप कुछ आपके पास ही कंप्यूटर पे देखिए, आप कैसे कर सकते हैं, आवाज उसको बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर? एनीवे, हमारे आज के इस सेकंड सेशन के दूसरे स्पीकर है आदरणीय डॉक्टर विवेकानंद जैन सर, जिनका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। So Dr. Vivekananda Jain is working as Deputy Librarian in Banaras Hindu University, Varanasi, India. He has 28 years experience in librarianship. Before joining the Banaras Hindu University Library, he served special libraries of Tropical Forest Research Institute, Jabalpur, and National Informatics Center, New Delhi. He has, to his credit, about 50 research and seminar papers and 2 books on efficiency of internet search engines. He has contributed 12 chapters in different books, including IFLA series and Cambridge Scholar Publishing. So Dr. Jain was associated with IFLA Standing Committee on Information Technology section during 2009 to 2013. He attended the IFLA World Library and Information Congress at Milan, Paris, Tallinn, Helsinki, and Singapore. He is a life member of ILA, IAS, LIC, IATLIS, AIFU, CTO, and SIS. तो जिनके 2 बुक्स भी है, 16 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, काफी बड़ा उनका एक्सपीरियंस है। तो ऐसे एक अच्छे होनहार और अत्यंत प्रतिभावान स्पीकर हमें यहाँ पर प्राप्त हुए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें मार्गदर्शन करें। डॉक्टर जैन सर। डॉक्टर विवेकानंद जैन सर। सर, आपकी आवाज थोड़ी सी धीरे आ रही है, धीमी आ रही है। तो कोई प्रॉब्लम है शायद उधर। यहाँ पे देख, 1 सेकंड, मैं यहाँ भी देखता हूँ क्या कर सकते हैं।
डॉक्टर विवेकानंद जैन सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज तो आ रही है। जी मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? एक मिनट सर, आ रही है आवाज। हम चेक करते हैं, थोड़ी धीमे हमें हमारे तक पहुंच रही है, तो एक मिनट। अब क्या? हेलो, जी सर। ठीक आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? हेलो, उसमें आ रही है? इसमें आ रही। जी सर, कंटिन्यू कीजिए सर। कंटिन्यू कर। यहाँ पे नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं स्टार्ट करूं? मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? स्क्रीन शेयर हो रही है? उसमें से सुन लेना। हेलो, हेलो, हाँ जी सर। आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो। यस, स्पीकिंग। जी यस सर, प्लीज प्लीज। स्क्रीन दिख रही है आपको? जी सर, स्क्रीन दिख रही है। फ्री ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज फॉर एकेडमिशियन, ये दिख रहा है? जी सर। अच्छा, तो मैं अपना बोलना शुरू करता हूँ, जितना भी जी जैसा हो सके। और आवाज बढ़ाने का कुछ ऑप्शन हो तो अपने तरफ से बढ़ा लें। आवाज का देखिए, बढ़ाने का है क्या ऑप्शन? नहीं, देखा मैंने। मैं अपने तरफ से कुछ ट्राई कर जाइए। एक मिनट होल्ड करेंगे तो मैं दूसरे तरह का स्पीकर लेके चेंज कर लेता हूँ। एक मिनट होल्ड करिएगा। जी सर। ये कंप्यूटर वाले कुछ कर नहीं, उनके यहाँ से ही हो शायद। अच्छा। क्या किया जा सकता है? मुझे भी यही तो कुछ चलेगा। ये बहुत सुंदर हुआ, लेकिन मैंने कर लिया। कैसा लगा? वही मैंने सब पहले क्लियर किया। सिंपल। भौमिक बिल्कुल बढ़िया बोला। बहुत मस्त। इन लोगों ये को पहली दिखना बार अच्छा हुआ। अच्छा बोले, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। ये आपको रिपोर्ट भी लिखने की चाहिए, उनके बारे में लिखा था मैंने। ठीक है कुछ नहीं, बस मुझे रिपोर्ट Ma'am, Vandana ma'am. यस सर। मैम, हु इज स्पीकिंग? Ma'am, this is Sri Lakshmi, but sir is not be audible, ma'am. Actually, only screen is been like seen here. Okay, he is not speaking right now. Please wait for this, okay? Okay, ma'am. Thank you so much. हेलो, कंप्यूटर वाले कोई है क्या? वीडियो ऑफ कर दीजिए थोड़ी देर के लिए और माइक म्यूट कीजिए। आवाज बंद करो। हेलो,
Dr. Vivekanand sir. Yes sir. ठीक है आप ट्राई कीजिए, हम वेट कर रहे हैं। हम जी 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 Good afternoon. Hello. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, myself Chitra Sengupta. I want to present my paper today. Like once slot will come. Firstly, you listen, Dr. Vivekanand Jain. Yes, ma'am. Of course. Once. After this, Professor Anurag. Yes, ma'am. After this, M. Jhangi sir. Okay, Okay. ma'am. Okay, ma'am. And the time is which जो हमारे पास बचेगा वो पूरा का पूरा समय आप लोगों के लिए होगा। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. अभी खत्म नहीं हो रहा, अभी कल भी है? तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं। आवाज आ रही है मैडम? आपकी आवाज आ रही है? Okay, ma'am. ओके। हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है? जी सर। मैं शुरू करूं? जी सर, प्रारंभ कीजिए। बड़ा मुश्किल हो गया है। चलो, मैं आप सभी को ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के बारे में जानकारी दूंगा जो कि इंटरनेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं। ये वो रिसोर्सेज हैं जो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी देख सकता है। आज 21st सेंचुरी में ऑनलाइन एजुकेशन स्कूल लेवल से पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक प्रारंभ हो गई है और कोविड-19 के चलते और भी इसका प्रभाव बढ़ गया है। आज लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात होती है, उसमें लाइब्रेरीज बहुत हेल्पफुल हैं। आज इंटरनेट पर बहुत सारे ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नल्स, ई बुक्स, ई थीसिस, डिजिटल लाइब्रेरीज, ओपन कोर्सवेयर तथा इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज शामिल हैं। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? यस सर। Yes, sir. कंटिन्यू? यस सर। अच्छा, मैं अपना वीडियो बंद कर दूं। वीडियो की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो ऑनलाइन रिसोर्सेज की तरफ हम लोग क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे मुख्य कारण है कि ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे कि आप कई लेक्चर में सुन चुके होंगे, राउंड द क्लॉक एक्सेस रहते हैं, मल्टीपल एक्सेस सर्च फैसिलिटीज होती है, ये आउट ऑफ प्रिंट नहीं होते हैं, ये हमेशा उपलब्ध रहते हैं, इनके पब्लिकेशंस में टाइम लैग नहीं होता है। जब भी हम कोई आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं तो उसमें जो रेफरेंस रहते हैं उनको हम लोग फर्दर क्लिक करके उसमें जा सकते हैं। लिंकिंग विथ साइटिंग सोर्सेज,
इजी टू यूज एंड डिसिमिनेट। अगर आप चाहें किसी व्यक्ति को कोई आर्टिकल भेजना तो विदिन सेकेंड्स आप ईमेल के द्वारा या अन्य माध्यम से उसको डिसिमिनेट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज के आने से सिर्फ स्टोरेज स्पेस, आपको स्थान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक सीडी में, पेन ड्राइव में बहुत सारा लिटरेचर आ जाता है। एंड इट इंक्रीज रिसर्च प्रोडक्टिविटी। आज आसानी से इंफॉर्मेशन मिल जाती है और इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है। तो इस तरह से रिसर्च प्रोडक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। लेकिन जब भी हम लोग ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज करें तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम कॉपीराइट तो नहीं कर रहे हैं। यदि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम इंटरनेट से लेते हैं या कहीं से ले रहे हैं, हमें चाहिए होता है कि हम उसका प्रॉपर साइटेशन दें। और आजकल कॉपीराइट के साथ साथ प्लेगरिज्म का भी बहुत ज़्यादा मुद्दा है। सभी रिसर्च स्कॉलर को और टीचर्स को इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो उसको प्रॉपर साइट करें, अन्यथा वह प्लेगरिज्म के तहत आ जाएगी। ऑनलाइन रिसोर्सेज का जितना एडवांटेज है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर्ली ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होती है। और जो आज वर्चुअल एजुकेशन पे जो ट्रेनिंग चल रही है, उसका मुख्य कारण ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को लाइफ लॉन्ग लर्निंग की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति एक डिग्री या पढ़ने के बाद ये नहीं सोच सकता कि अब हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। डेली नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए चेंजेज आ रहे हैं, नए चैलेंजेज आ रहे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को आजकल हमेशा पढ़ने की आवश्यकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। सभी के लिए सूचना की आवश्यकता है और सभी को सूचना मिलना चाहिए। हायर एजुकेशन एंड डिग्रीज फ्रॉम एनीवेयर। ऑनलाइन रिसोर्सेज के माध्यम से कोई भी व्यक्ति कहीं से भी ओपन कोर्सवेयर के माध्यम से डिग्री प्राप्त कर सकता है। आप चाहें तो जहां पर हैं किसी भी देश की और विदेश की यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करके लाभ उठा सकते हैं। कुछ आवाज आ रही है? Yes. किसी का माइक चालू हो तो बंद कर लें। टू फुलफिल डिजिटल डिवाइड अमंग इंफॉर्मेशन यूजर्स। जो भी इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं उनके बीच में डिजिटल डिवाइड नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति को ज्यादा सूचना मिले, किसी को कम मिले। इसको खत्म करने के लिए भी ऑनलाइन एजुकेशन बहुत लाभप्रद है। हम डिस्कस कर रहे हैं ओपन एक्सेस को, कि फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज ओपन एक्सेस जो होते हैं वो कैसे मिलें और क्यों मिलें। तो भारत सरकार ने एक नियम पॉलिसी बनाई है कि जो भी रिसर्च पब्लिक फंडेड हो रही हैं उनको पब्लिक डोमेन पर डाला जाना चाहिए। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी, द फाइंडिंग्स ऑफ पब्लिक फंडेड रिसर्च शुड बी ऑन पब्लिक डोमेन। यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, CSIR में, DST में जो भी रिसर्च हो रही है वह जनता के द्वारा दिए गए टैक्स मनी से होती हैं। इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये पॉलिसी है कि जो भी फाइंडिंग्स आएंगी वह जनता के लिए उपयोगी होना चाहिए, इसलिए उसे पब्लिक डोमेन पर, इंटरनेट पर डाला जाना चाहिए। ओपन एक्सेस के कई एडवांटेज हैं, जैसे ऑथर्स के लिए अगर उसने इंटरनेट पे पब्लिकली डाल दिया है तो उसके ग्लोबल एक्सेस हो जाएगा, उसके ऑडियंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। रीडर्स के लिए फायदा है कि ओपन एक्सेस गिव्स देम बैरियर फ्री एक्सेस टू द लिटरेचर दे नीड फ्रॉम देयर रिसर्च। जिस व्यक्ति को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर वो ओपन एक्सेस में है तो उसे आसानी से मिल जाएगी। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ओपन एक्सेस के माध्यम से टीचर्स को भी नई नई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और अपने स्टूडेंट्स को दे सकता है। लाइब्रेरीज के लिए भी फायदा है, यूनिवर्सिटीज को भी फायदा है और एक आम जनता को भी इससे बहुत फायदा है। तो ओपन एक्सेस भी कई तरह के होते हैं। सभी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर फ्री नहीं रहती, उसमें भी कोई लिमिटेशंस होती हैं। तो इनमें भी गोल्ड ओपन एक्सेस, ग्रीन ओपन एक्सेस, ब्रॉन्ज ओपन एक्सेस और डायमंड ओपन एक्सेस हैं। आपको किसी ओपन एक्सेस पत्रिका में अगर अपना पब्लिकेशन निकालना है तो कुछ में पेमेंट देना पड़ता है। जैसे गोल्ड ओपन एक्सेस इज वेयर एन ऑथर पब्लिशेस देयर आर्टिकल इन एन ऑनलाइन ओपन एक्सेस जर्नल, लेकिन इसमें आपको ओपन एक्सेस में पब्लिश करने के लिए पेमेंट देना पड़ता है। ग्रीन ओपन एक्सेस वह है जहां पर ऑथर अपना आर्टिकल पब्लिश करने के बाद उसको सेल्फ आर्काइव में अपनी वेबसाइट पर या इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट दूसरे के लिए उपलब्ध करा देता है। इसी तरह से ब्रॉन्ज भी है, उसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं।
publishers can deny access to the majority of open access journals, articles on their discretion. अगर वो चाहे तो उपलब्ध करा दे और चाहे तो नहीं कराए. डायमंड ओपन एक्सेस, स्कॉलरली पब्लिशिंग फ्री ऑफ फीस एंड एक्सेस चार्जेस. इसमें पब्लिश करने के लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है. इन दिस केस पब्लिकेशंस आर सपोर्टेड बाय पब्लिक फ्री ऑफ कॉस्ट. इसमें आम जनता को मिल जाता है, लेकिन इसमें जनता के सपोर्ट से ही ये पब्लिश होते हैं डायमंड. तो इस तरह से हम देखते हैं कि पब्लिकेशंस हैं वह अलग अलग कलर में आपको दिखेंगे, जो इंटरनेट पे फ्री भी हैं. किसी में येलो दिखेगा, किसी में ग्रीन दिखेगा, किसी में ऑरेंज दिखेगा, किसी में ब्राउन दिखेगा. ये BHU के एक प्रोफेसर के पब्लिकेशन है. टोटल पब्लिकेशन 576 दिख रहे हैं, लेकिन ओपन एक्सेस वाले येलो वाले 24, ग्रीन वाले 20, ब्रॉन्ज वाले 457 एंड डायमंड वाले 11. इस तरह से अलग अलग कलर में अलग अलग उसके पब्लिकेशंस दिखेंगे. ओपन एक्सेस का हायर एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हुआ है. आज पहले रिसोर्सेज मिलना बहुत मुश्किल होता था, लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी. बड़ी लाइब्रेरीज में तो आसान था, लेकिन एक छोटी लाइब्रेरी या छोटे कॉलेजेस में रिसोर्सेज नहीं मिल पाते थे, तो बहुत ज़्यादा डिजिटल डिवाइड बनी हुई थी. लेकिन आज UGC ने ई-शोध सिंधु के माध्यम से तथा एक UGC इन्फोनेट प्रोजेक्ट था, उसके माध्यम से कॉलेजेस में एनालिस्ट के माध्यम से हजारों की संख्या में जर्नल्स तथा ई बुक्स उपलब्ध कराई हैं, जिससे कि सभी लोगों को ऑनलाइन रिसोर्सेज मिल रहे हैं. अब मैं आपको वह फ्री रिसोर्सेज बता रहा हूं जो सभी के लिए उपयोगी हैं और कोई भी व्यक्ति कहीं से भी एक्सेस कर सकता है. सभी लोगों को सुनाई दे रहा है? यस सर. अच्छा. यस सर. हाँ, तो आप एक इम्पोर्टेंट वेबसाइट बता रहे हैं, इनको आप नोट कर लें, या ये आपको पावर पॉइंट मिल जाता है तो आपको बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है, मेरी तरफ से ये फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए उपलब्ध है, जो भी चाहे उसको एक्सेस कर सकेंगे. ठीक है, तो ये डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, ये भारत सरकार के सहयोग से चलती है. डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसमें 5.5 लाख से अधिक बुक्स हैं और हजारों की संख्या में जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स हैं. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इसका एड्रेस है dli.gov.in. बहुत से लोगों ने इसको यूज भी किया होगा. आप कोई भी पुरानी बुक्स चाहते हैं, जो रेयर बुक्स हैं, जो कॉपीराइट के तहत नहीं है, वह इस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. कुछ लोग होंगे जिन्होंने यूज किया होगा डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया. इसमें आपको अनेक भारतीय भाषाओं की पुस्तकें मिल जाएंगी और इसमें राष्ट्रपति भवन सबसे ऊपर दिख रहा है, राष्ट्रपति भवन. इसके अलावा अपने देश की अन्य लाइब्रेरीज दिख रही हैं, तो आप राष्ट्रपति भवन की भी लाइब्रेरीज को घर बैठे एक्सेस कर सकते हैं. ये बहुत अच्छी वेबसाइट है. इसका एड्रेस ऊपर भी दिख रहा है, 2 एड्रेस दिख रहे हैं, एक dli.serc.iasc.arnet.in, एक ऊपर दिख रहा है dli.gov.in. किसी भी तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. मैंने पंडित मदन मोहन मालवीय पर इस पर बुक्स सर्च किया, तो बहुत सारी पुरानी बुक्स जो कि हमारी लाइब्रेरी में भी नहीं थी, वो इसके माध्यम से हमको प्राप्त हो गई. ये सब बुक्स फ्री होती हैं, इनको पूरा का पूरा आप डाउनलोड कर सकते हैं. एक और इम्पोर्टेंट वेबसाइट है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया. पहला बताया डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, दूसरा है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया. यह IIT खड़गपुर के माध्यम से चलती है. इसमें भी अपने देश की लाखों बुक्स, इसमें दिख रहा है 1.7 करोड़ कंटेंट. आपको अपने देश की लाखों बुक्स इसमें मिल जाएंगी और हर भारतीय लैंग्वेज में मिल जाएंगी. इसकी विशेषता ये है, इसमें जो लिटरेचर है उसको क्लासीफाई कर दिया है प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए, स्कूल लेवल के बच्चों के लिए, कॉलेज लेवल का और यूनिवर्सिटी लेवल का. तो ये नहीं है आप लोग गूगल में सर्च करते हैं जब इन्फॉर्मेशन, तो एक छोटा बच्चा भी सर्च करता है, उसको भी वही इन्फॉर्मेशन आती है, और एक प्रोफेसर सर्च करता है, उसको भी वही आती है. इसमें इन्फॉर्मेशन को क्लासीफाइड कर दिया है. तो आप जब इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो अपना लेवल बताएंगे कि आई एम ए रिसर्च स्कॉलर, आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, देन आपको जो आउटपुट आएगा वो उसी लेवल का आएगा. ठीक है, इसमें लिखा हुआ है एजुकेशनल मटेरियल्स आर अवेलेबल फॉर ऑल यूजर्स रेंजिंग फ्रॉम प्राइमरी टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल. NDLI ये IIT खड़गपुर की द्वारा चलती है. तीसरा इंपोर्टेंट वेबसाइट है
प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग। इसमें यूरोपियन कंट्रीज का लिटरेचर है, वैसे तो सभी इंग्लिश का क्लासिक लिटरेचर इसमें है। इसमें हजारों की संख्या में क्लासिक बुक्स जो आपने सिर्फ नाम सुने होंगे, नहीं पढ़ी होंगी, वो भी इसमें मिल जाएंगी। शेक्सपियर का पूरा लिटरेचर मिल जाएगा, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं। इसका एड्रेस है gutenberg.org। आप लोगों को स्लाइड दिख रही है? यस सर। हाँ, इसका एड्रेस जो नीचे दिख रहा है gutenberg.org। इसमें आप हजारों की संख्या में क्लासिक बुक्स देख सकते हैं और ये वेबसाइट बहुत यूज होती है। प्रत्येक सप्ताह इसमें से लाखों बुक्स डाउनलोड होती हैं। एक और अगली इंपॉर्टेंट वेबसाइट है वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी। पहला बताया डिजिटल लाइब्रेरी, दूसरा बताया डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, तीसरा आपको बताया प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, चौथा आपको बता रहे हैं वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी। इसमें थोड़ा सा अंतर है, ये अपने विश्व के जो कंटिनेंट्स हैं उसके हिसाब से लिटरेचर बटा हुआ है। इसमें आपको दिख रहा होगा यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो जो कंटिनेंट्स हैं तो इसमें कंटिनेंट के हिसाब से लिटरेचर को डिवाइड किया गया है। तो आपको जब लिटरेचर सर्च करना है, आपने सोचा कि हमको कोई पुरानी बुक्स चाहिए है जो कि 800 से 1500 ईस्वी के बीच छपी हो और उसमें एशिया कंटिनेंट की हो, तो मैंने इसमें एशिया सेलेक्ट किया। देन एक इसमें नीचे रेंज बनी हुई है टाइम पीरियड की, फ्रॉम द बिगिनिंग टू टिल डेट, और उसमें आप इस मीटर को खिसका के उस पर सेट करेंगे और जो ही आप डिसाइड कर देंगे आप अपने आउटपुट पा सकते हैं। मैंने इसमें अकबरनामा सर्च किया और पूरा का पूरा अकबरनामा, जिसको कि मिलना और देखना भी संभव नहीं होगा क्योंकि आर्काइव्स में रखा होगा, इस पर आपको पूरा का पूरा मिल गया। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अलग अलग वेबसाइट अलग अलग कार्य के लिए उपयोगी हैं, हर चीज पर पूरी चीज नहीं मिलेगी, इसलिए सभी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जिनको आप नोट करते जाएंगे और जरूरत पड़ने पर उसी हिसाब से, जैसे हिस्ट्री वालों के लिए बड़ी उपयोगी होगी क्योंकि मैंने देखा कि आपके पार्टिसिपेंट्स अलग अलग विषयों के हैं और अलग अलग रेंज के हैं, रिसर्च स्कॉलर, पीएचडी, प्रोफेसर, ऑल। जी सर। हाँ, तो इसमें आपको अब नेक्स्ट बता रहे हैं संस्कृत ई बुक्स। ये संस्कृत वालों के लिए उपयोगी होगा। ये संस्कृत ebooks.org वेबसाइट है इसका। इसमें आपको संस्कृत से संबंधित लिटरेचर मिल जाएगा। या आप दिल्ली में जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है उसकी वेबसाइट पे जाएं तो वहां पर भी ई बुक्स और जर्नल्स, थीसिस सब कुछ अवेलेबल हैं, तो उनकी वेबसाइट के माध्यम से भी जा सकते हैं, अदरवाइज संस्कृत ई बुक्स के माध्यम से भी जा सकते हैं। ये वेबसाइट है नेक्स्ट वेदपुराण.net। इसमें हिंदू धर्म के जो वेद और पुराण हैं वो पूरे के पूरे उपलब्ध हैं। कई बार हमारे पास क्वायरी आती है कि बनारस में है, बीएचयू में है, इनके पास मिल जाएगा। मैं उनको ये वेबसाइट बता देता हूँ कि इस पे चले जाइए, पूरा का पूरा डाउनलोड फ्री कर लीजिए। जैसे कि इसमें आपको दिख रहे हैं अग्नि पुराण, भागवत पुराण, और भी लिखे हैं ब्रह्म पुराण, गरुड़ पुराण, एवरीथिंग इज देयर। तो जो हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य चाहते हैं वो वेदपुराण.net में जाएं और उनको ये सब मिल जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट वेबसाइट है jainelibrary.org। इसमें जैन धर्म से संबंधित साहित्य, सभी पुरानी बुक्स हैं, जैन धर्म का साहित्य है, वो इसमें मिल जाएगा jainelibrary.org। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट वाले बता रहे हैं आपको। इसमें सिर्फ कई वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करना होता है जिससे कि वो लोग डाटा मैनेज कर सके कि कितने यूजर ने हमारा डाउनलोड किया। अदरवाइज ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक बार अकाउंट बना लेंगे, और अकाउंट बनाते वक्त ये ध्यान रखें कि अपना ईमेल आईडी तो भले ही डालें, लेकिन पासवर्ड प्रत्येक बार अलग अलग सर्च के लिए अलग अलग बनाएं, जिससे कि आपका मेन पासवर्ड चोरी ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट है archive.org। इसको नोट अवश्य कर लें। जब इंटरनेट पर कहीं भी कोई भी चीज ना मिले, वेबसाइट पे चले जाइए। ये सभी डिजिटल लाइब्रेरीज का एक तरह से संग्रह है, archive.org। इसमें विश्व की सभी डिजिटल लाइब्रेरीज को एक साथ समाहित करके इसे इंटरनेट आर्काइव भी कहते हैं।
Internet Archive is a non-profit library of millions of free books, movies, software, music, website and more. Everything is there. इंटरनेट पे आज तक जो भी चीज थी पुरानी, जो इंटरनेट से डिलीट भी हो गई है, वो भी इसमें आपको मिल जाएगी। इस वेबसाइट को अवश्य नोट कर लें, archive.org। इसमें अमेरिकन लाइब्रेरीज, यूरोपियन लाइब्रेरीज, यूनिवर्सल लाइब्रेरीज और अपने यहाँ की डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भी शामिल है। ये दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ, तो इस तरह से जो कई लाइब्रेरीज का एक साथ एक जगह सर्च करना है, जैसे अपन गूगल समझते हैं कि गूगल पे सर्च करो, इसी तरह से अगर सभी पब्लिक लाइब्रेरी या डिजिटल लाइब्रेरीज को सर्च करना है तो archive.org। अब मैं आपको अगली वेबसाइट बता रहा हूँ, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस बुक। इसमें 406 पब्लिशर्स की करीब 33,000 एकेडमिक पीयर रिव्यूड बुक्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। doab.org, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस बुक्स। ठीक है, ये सब फ्री वाली हैं। नेक्स्ट है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट। भारत सरकार ने अपने देश में लोगों के घरों में, मंदिरों में मैन्युस्क्रिप्ट पड़े हुए हैं, तो उनको कैसे एक साथ लाया जाए, इसके लिए भारत सरकार ने एक अलग से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत नेशनल मिशन बनाया, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। इनकी वेबसाइट है namami.org, NAMAMI.org। इसके माध्यम से अपने देश में, क्योंकि लोग मैन्युस्क्रिप्ट देते नहीं हैं, तो कम से कम इतनी जानकारी अवश्य मिल जाती है कि उस मैन्युस्क्रिप्ट की कंडीशन क्या है, वह कहाँ पर अवेलेबल है। एक कैटालॉग है, इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि कौन सा मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ पर ओरिजिनल है, फिर आप वहाँ जाके देख सकते हैं किस कंडीशन में, ये भी लिखा हुआ है, कितने फोलियोज हैं वो लिखा हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट वेबसाइट है मैन्युस्क्रिप्ट की, ये हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए उपयोगी रहेगी, namami.org। अब मैं आपको बुक्स के बाद जर्नल्स के बारे में जानकारी देता हूं, जो फ्री ऑनलाइन जर्नल्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस तरह से बुक्स के लिए DOAB थी, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल था, बुक्स था, इसी तरह जर्नल्स का डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स। इसको नोट कर लें सभी लोग, DOAJ.org, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, पार्टिसिपेंट्स होंगे जिनको अपने विषय के जर्नल्स नहीं मिलते होंगे। इसमें करीब 13,000 जर्नल्स हैं और लाखों की संख्या में आर्टिकल्स हैं। इसमें आपके जो पार्टिसिपेंट्स में देख रहे थे, नर्सिंग, उनके बच्चों को नहीं मिलता है लिटरेचर तो इसमें आप सब्जेक्ट वाइज सर्च कर सकते हैं। इसमें सभी फ्री वाले जर्नल्स हैं। ओके सर, थैंक यू सर। DOAJ.org, इसमें सब्जेक्ट वाइज भी दिए हुए हैं और आप टाइटल अगर पता है तो उससे देख लेंगे। इसमें वर्ल्ड के वह जर्नल्स हैं जो 10,000 से ज्यादा हैं। 10,000 जर्नल्स बहुत बड़ा नंबर होता है, तो इसमें 11,000 समथिंग दिख रहा है जब का हमने लिया है। तो इसमें ऑनलाइन फ्री जर्नल्स हैं, आप इसके माध्यम से अगर चाहें तो आर्टिकल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, जर्नल्स भी देख सकते हैं। पूरे उपयोगी नहीं होंगे तो कुछ तो आपके लिए जरूर उपयोगी होंगे। DOAJ.org। नेक्स्ट वेबसाइट है निस्केयर ऑनलाइन पीरियोडिकल रिपोजिटरी। भारत सरकार की CSIR की अनेक लेबोरेटरीज हैं, 40 से ज़्यादा लेबोरेटरीज हैं। उनके जितने भी जर्नल्स पब्लिश्ड होते हैं, साइंटिफिक जर्नल्स, वो निस्केयर की वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। पहले ये पेड था, अब नाउ इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा कि मैंने बताया कि रिसर्च फाइंडिंग्स को फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पर उपलब्ध कराना है, इसलिए CSIR ने इस निस्केयर के द्वारा सभी पब्लिकेशंस, उनके इंडियन जर्नल ऑफ बॉटनिकल रिसर्च, इंडियन जर्नल ऑफ सब कुछ केमिकल, जो भी दिख रहे हैं, ये सभी आपको पूरे के पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। निस्केयर की वेबसाइट है onlinepublishing@niskare। इसके अलावा अगली वेबसाइट है PubMed। ये मेडिकल साइंस के जर्नल्स, मेडिकल साइंस और नर्सिंग के बच्चों को ये उपयोगी है। PubMed सभी लोग जानते होंगे, मेडिकल वाले। इस पर लाखों की संख्या में मेडिकल से संबंधित हेल्थ इंफॉर्मेशन वाले जर्नल्स, आर्टिकल्स मिल जाते हैं।
कुछ जर्नल्स जो पेड होते हैं उनका एब्स्ट्रैक्ट लेवल तक मिल जाता है, क्योंकि सभी चीज फ्री मिलना संभव नहीं होता है। तो बहुत सारे आर्टिकल्स एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे मिलेंगे और बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज के वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, तो आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट फुल टेक्स्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज। अनेक संस्थाओं ने अपनी एक इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट बनाई हुई है, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी बनाई है। उनके वहाँ पर जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं उनके पब्लिकेशंस इसमें डाले जाते हैं। जैसे BHU की BHUIR बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। इस तरह से अपने देश में जितनी भी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी हैं उनको देखने के लिए आपको एक वेबसाइट नोट करना है, opendoor.org। ओपन डोर डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज, मतलब वो है रिपोजिटरीज जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। एक कमांड दीजिए, विश्व भर की आपको डायरेक्टरीज जो फ्री वाली हैं वो मिल जाएंगी। ओपन डोर OPENDOAR.org। ठीक है, इसमें से फिर आप देख लेंगे CSIR वाली, ICIR वाली, जितनी भी अपने देश की हैं वो अलग दिख जाएंगे। पहले आप ओपन डोर सिलेक्ट करेंगे, उसमें से आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, पूरे विश्व की आ जाएंगी। तो इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे तो इंडिया की जो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है वो आ जाएंगी। जैसे आपको यहाँ पर टेसिकोस दिख रहा है, ICR की रिपोजिटरी। नेक्स्ट है DSpace डॉट, ये गोखले इंस्टीट्यूट की एक एग्जाम्पल के रूप में दिया है। पूना में एक गोखले इंस्टीट्यूट है, उसकी वेबसाइट है गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। इसमें अपने देश की स्वतंत्रता के समय की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जितनी भी रिपोर्ट है एनुअल मीटिंग की, वो सब कुछ इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। तो ये पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के बच्चों को बड़ा उपयोगी है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है पूरा, डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। अब आपको हिंदी के रिसोर्सेज के बारे में जानकारी देता हूँ। हिंदी वाले भी बच्चे होंगे शायद पार्टिसिपेंट्स में। जी सर। हैं, चलो तो अगली इंपॉर्टेंट वेबसाइट है hindismay.com। एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, उसकी वेबसाइट है hindismay.com। इसके माध्यम से हिंदी के उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक सब कुछ मिल जाते हैं। इस वेबसाइट के माध्यम से आप हिंदी का लिटरेचर सर्च कर सकते हैं, hindismay.com। नेक्स्ट है गीताकविता.com, गीता-कविता.com। इसमें बहुत सारी पोएम्स हैं, जो भी आपने बचपन में किसी ने पोएम पढ़ी हो, अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप इसमें जाएंगे, इसमें मिल जाएगी। एक है kavitakosh.org, इसमें भी सभी सारी पोएम, कविताओं की पूरी डायरेक्टरी या डिक्शनरी है, कविता कोश। जैसा कि मैंने पहले संस्कृत का बताते वक्त बताया था कि संस्कृत ई-बुक्स था, इस sanskrit.nic.in, इस संस्कृत यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, दिल्ली में जो राष्ट्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी है, उसके माध्यम से संस्कृत की वो और जर्नल्स वगैरह एक साथ मिल जाएंगे। संस्कृत भाषण। इसके अलावा उर्दू के लिए एक वेबसाइट है rex.org। इसकी बहुत सारे यूट्यूब पे भी मिलेंगे, गजल, शेर, शायरी। लेकिन आपको ई बुक के माध्यम से ये बता रहा हूँ, तो उर्दू ई बुक्स, उस पर 23,000 से ज्यादा ई बुक्स हैं जो कि उर्दू की हैं, पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसका एड्रेस है rekta.org। तो हिंदी का बता दिया, संस्कृत का बता दिया, उर्दू का बता दिया, और अदर इंडियन लैंग्वेजेस के लिए आपको ऑलरेडी डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बता दिया, उर्दू की ई बुक्स। अब आपको अगले स्टेप में हम बताने जा रहे हैं ओपन कोर्सवेयर। आपको इसके पहले के लेक्चर में प्रोफेसर साहब जो बोल रहे थे इथोपिया वाले, उन्होंने बहुत कुछ बताया, और हमारे सीनियर डॉक्टर एस के तिवारी भी ओपन कोर्सवेयर के बारे में बता चुके हैं। ओपन कोर्सवेयर के माध्यम से आप कहीं से भी कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोर्स को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम उनके वीडियो लेक्चर्स देख के किसी भी टॉपिक पर जानकारी तो अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी कॉलेज में हैं या यूनिवर्सिटी में हैं, आपको किसी बड़े प्रोफेसर का कहीं का लेक्चर सुनना है, आप चाहते हैं उस टॉपिक को डालें, यूट्यूब के माध्यम से वीडियो लेक्चर सुन के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आपका अगर इंटरेस्ट है कि एक एक्स्ट्रा कोई कोर्स ज्वाइन करके डिग्री ले लें, तो पार्ट टाइम में विद इन वीक, विद इन मंथ एक नई डिग्री भी अपने करिकुलम में जोड़ सकते हैं।
भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है NMEICT, नेशनल मिशन फॉर एजुकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें एक जो EPG पाठशाला है, कल आपको तिवारी जी ने बताया होगा। EPG पाठशाला के माध्यम से बहुत सारे ओपन कोर्स वेयर के बारे में, जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज हैं, उनके वीडियो लेक्चर्स, उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक भारत सरकार की वेबसाइट है साक्षात, इसके माध्यम से भी आप बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। MIT यूनिवर्सिटी, जो विश्व की नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानी जाती है IT के फील्ड में, उसका ओपन कोर्स वेयर है। इसके माध्यम से भी आप MIT यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के लेक्चर वगैरह देख सकते हैं। एल यूनिवर्सिटी है, एल यूनिवर्सिटी का ओपन एल कोर्सेज, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कई बार कोर्स तो फ्री ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डिग्री चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, तो कुछ पेमेंट भी देना होता है। तो दोनों तरह से आपको जो उचित लगे उसको कर सकते हैं। भारत सरकार की IGNOU की वेबसाइट है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की ज्ञान कोर्स, इसमें भी बहुत सारे कोर्स मटेरियल हैं। तो कम से कम, जैसा कि हमने कहा कि कोर्स का लेक्चर तो सुन ही सकते हैं किसी टॉपिक पर। वैसे आजकल यूट्यूब पर भी बहुत सारे लेक्चर आ गए हैं, लेकिन स्टैंडर्ड लेक्चर अगर चाहिए है तो ज्ञानकोश.ac.in पर जाकर के IGNOU के वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और आप अगर फैकल्टी मेंबर हैं तो आप बहुत सारे कोर्स मटेरियल तैयार करके अपलोड भी कर सकते हैं और पेमेंट ले सकते हैं। एक swayamprabha.gov.in ये भी वेबसाइट है, इसमें भी बहुत सारे DTH चैनल हैं जिनको सरकार चाहती है कि लोग घर पर टीवी के माध्यम से भी पढ़ें, तो उसके लिए 34 DTH चैनल हैं स्वयंप्रभा। लेकिन सब लोग केबल यूज कर रहे हैं, कोई नहीं पढ़ रहा है, लेकिन आते हैं कुछ चैनल जिनको अगर टाइमिंग देख के चलें तो कुछ लाभ लिया जा सकता है। अगला हमारा फील्ड है ऑनलाइन थीसिस, ई-थीसिस, जो PhD स्कॉलर होंगे या फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके लिए बड़ा उपयोगी है। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज शोध गंगा इन्फ्लेवनेट सेंटर अहमदाबाद के माध्यम से उपलब्ध है। इसमें 2,80,000 से ज़्यादा फुल टेक्स्ट थीसिस, पहले थीसिस मिलती नहीं थी, आज शोध गंगा के माध्यम से पूरी की पूरी थीसिस उपलब्ध हो रही है। इसमें 463 यूनिवर्सिटी की आज की तारीख तक 2,87,000 ऑनलाइन फुल टेक्स्ट थीसिस हैं। आप अपने टॉपिक पर थीसिस सर्च करिए, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन यूज करने से पहले प्रॉपर्ली साइटेशन दें, प्लेगरिज्म में ना फंसें, इसकी हम सलाह देते हैं। लेकिन पढ़ने के लिए या सब्जेक्ट के मैटर के लिए भी किसी भी टॉपिक को आप सर्च करके पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हैं शोध गंगा के माध्यम से। अंतर्राष्ट्रीय थीसिस अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए होता है ओपन प्रोक्वेस्ट। भारत में सर्च करने के लिए शोध गंगा भारत की थीसिस के लिए, आउटसाइड इंडिया की थीसिस के लिए है प्रोक्वेस्ट। प्रोक्वेस्ट डाटाबेस आता है, वो पेड होता है, लेकिन ओपन प्रोक्वेस्ट जो है वो फ्री है। तो आप अंतर्राष्ट्रीय थीसिस अगर देखना चाहते हैं, उनको फुल टेक्स्ट देखना चाहते हैं फ्री, तो ओपन प्रोक्वेस्ट के माध्यम से उनको देख सकते हैं। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? जी जी जी। अच्छा, ओपन प्रोक्वेस्ट से अंतर्राष्ट्रीय थीसिस देख सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट वेबसाइट बताना चाहते हैं, इन्फ्लेवनेट सेंटर अहमदाबाद की, जिसके माध्यम से अभी आप देख रहे थे कि शोध गंगा भी उन्हीं का प्रोडक्ट है। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेजेस के लिए तो एनलिस्ट है और यूनिवर्सिटीज के लिए ई-शोध सिंधु है। इसमें बहुत सारे इनके एक्टिविटीज हैं, इंडिकेट, सोल, ई-शोध सिंधु, शोध गंगा, विद्यामित्र एंड विद्वान। जो जिस डाटाबेस को यूज करना चाहे, सब डाटाबेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। UGC का इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है अहमदाबाद में, इन्फ्लेवनेट सेंटर। तो आप इंटरनेट पे जाएंगे, इन्फ्लेवनेट लिखिए, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, इन्फ्लेवनेट.ac.in, आपको शोध गंगा से लेके सभी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में जाएंगी। PhD करने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट वेबसाइट है। उसी में इंडिकेट है, इंडिकेट में पूरे देश जो अभी थीसिस फुल टेक्स्ट नहीं है, जैसे BHU में 15,000 थीसिस हैं, लेकिन अभी शोध गंगा में सिर्फ 3,000 अपलोड हो पाई हैं। तो एक यूनियन कैटलॉग होता है। ব্যাটারির আমি বারবার বলে দিলাম, ব্যাটারির কিনে এনেছে, ইলেকট্রিকের বললাম, তো ব্যাটারি তো আমাদের রয়েছে। ইলেকট্রিকের हेलो, हाँ जी,
कुछ कोई बोल रहा है बीच में। कंटिन्यू कीजिए सर। শুধু শুধু इंडिकेट के माध्यम से यूनियन कैटलॉग है जिसमें बुक्स, थीसिस एंड सीरियल्स हैं। एक विद्वान डाटाबेस है जिसमें फैकल्टी मेंबर्स अपना बायोडाटा अपलोड कर सकते हैं और उनको एक्सपर्ट के रूप में कहीं भी बुलाया जा सकता है। गूगल स्कॉलर में भी अपनी पर्सनल प्रोफाइल बनाई जा सकती है। इंटरनेट पर एंटी प्लेगरिज्म आजकल बहुत जरूरी है, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को यूजीसी ने उर्कुंड सॉफ्टवेयर दिया है और कई जगह अन्य टर्नटिन या अन्य सॉफ्टवेयर हैं जिनके माध्यम से आप प्लेगरिज्म को चेक कर सकते हैं। हिंदी की सोच के लिए एक सॉफ्टवेयर आया है। कॉलेजेस में जो फैसिलिटीज यूनिवर्सिटीज को 6000 जर्नल्स दिए जाते हैं, वही फैसिलिटीज कॉलेज को भी दिए जाते हैं और कॉलेजेस के लिए इसे एनलिस्ट के माध्यम से दिया जाता है और एक मिनिमम चार्ज लिया जाता है। तो जो छात्र फैकल्टी मेंबर्स कॉलेजेस से हैं वह इन्फिलिपनेट से कांटेक्ट करके 6000 जर्नल्स और लाखों की संख्या में बुक्स सिर्फ 6000 रुपए एनुअल देके प्राप्त कर सकते हैं एनलिस्ट के माध्यम से। इन्फिलिपनेट की वेबसाइट पर इसके बारे में भी जानकारी दी हुई है। ওরা পাচ্ছে এইটা বিল हम लोग जनरली गूगल सर्च करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन मेरी सलाह है कि गूगल स्कॉलर को सर्च करें तो आपको एकेडमिक पर्पज के आर्टिकल्स मिलेंगे। হ্যাঁ এগুলো সব আলাদা আলাদা করা যায়। ঠিক আছে कृपया बात ना करें, हमारा समाप्त होने की स्थिति में है। हेलो, हाँ जी, हमारी स्कॉलर से अनुरोध है कि वो थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखें। 803 টাকা जैसा कि आपको बताया कि जी सर। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इनको यूज करके डिजिटल डिवाइड को खत्म किया जा सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नाउ फ्री। स्कॉलर का कोई सवाल है? जेजेटी यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्स का कोई भी सवाल यदि अतिथि वक्ता से है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। হয়তো রিটার্ন নিয়ে এই যে অ্যাডজাস্ট করে খরচা হচ্ছে তো এই 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 একটা अभी नहीं, बाद में भी आपके मन में आए तो पूछ सकते हैं। ईमेल और फोन नंबर दिया गुड हुआ है। आफ्टरनून Yes, सर। एंटी प्लेगरिज्म का वो जो बोला था आपने सॉफ्टवेयर का उर्कुंड। का बोलिए। हाँ, उर्कुंड है। एंटी प्लेगरिज्म हाँ, एक कॉलेज या Yes, यूनिवर्सिटी yes. के माध्यम से आप अपने थीसिस को, रिसर्च पेपर को जमा करके इसको भेजते हैं और वहां से चेक होके आ जाता है रिपोर्ट सहित कि इसमें कितना प्लेगरिज्म है। एंटी प्लेगरिज्म। हाँ, Sir, same question I want to ask, whether do we have any plagiarism software for individual checkups or something like that? इंटरनेट पर बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री आप लिख देंगे फ्री प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर आ जाएगा, आप कर लेंगे। Individual checkups के लिए क्या सर? একসঙ্গে ঘুরে রেখেছে না তো এখানে কেটে দেয়া করে দেয়া যায়। फिर से बोलिए। हेलो, আর কি বলে वन बाय वन आस्क। 9-11 তো স্যার 9-11 পরে हेलो सर, हाँ बोलिए। is this plagiarism for the individual checkup sir? या Can we check Individual up? checkup. Can we check individually sir? इसमें? यस यस यू कैन चेक, Okay sir. but use only once. If you check multiple times, then it will show 100% plagiarism. When you check once, it uploaded on the internet, so Okay. fully sure it is perfect, then only check. हाँ. Okay sir. आपने पेपर इसमें तैयार, हमको लॉगिन होना पड़ता है and they will send us personal ID and passwords and all sir. आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज से हैं तो इस उर्कुंड के माध्यम से करिए, अदरवाइज आप फ्री वाले करिए। ठीक है, अगर आप एक बार अपलोड कर देते हैं तो वो इंटरनेट पे अपलोड हो जाता है, दूसरी बार चेक करेंगे तो 100% प्लेगरिज्म बता देगा। इसलिए अथॉराइज्ड प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर को ही यूज करें। Okay sir. ओके सर, थैंक यू सर। Thank you sir. एनी अदर क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नो सर, वेरी नाइस लेक्चर। नो सर, वेरी नाइस, वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर सर, वेरी थैंक यू। हाँ, इसको सभी बच्चों को लिए शेयर कर दीजिए, सभी के लिए शेयर कर दीजिए। वांट दिस important lecture for us. यस मैडम, यस मैम, स्वाति मैम। Now you all are happy? यस मैम, very good. थैंक यू very much. बिकॉज फ्री इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग। यस मैम।
Sir, if you have any problem, I am calling to you, sir. This यस, mobile इसमें लास्ट number. में हमने फोन नंबर एड्रेस दे दिया है, आप लोग Yes, sir. इंक्वायरी कर सकते हैं. Thank Okay, Thank you, sir. Very ऑल आर very वेलकम. thank you, थैंक यू sir. वेरी मच. हेलो हेलो, हाँ जी. एनीवन, जितने स्कॉलर्स हैं और जितने स्पीकर्स को आप सुन रहे हैं, आप उन्हें मेल के थ्रू पहले अपने क्वेश्चंस को लिख करके रख लीजिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. फिर उनको जैसे समय मिलेगा वो आपको रिप्लाई करेंगे. ठीक है? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Good. Okay, ma'am. बाय. Okay, okay, ma'am. Thank you, sir. Bye, bye, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं प्रोफेसर अनुराग जहांगीर. प्रोफेसर अनुराग, सॉरी, प्रोफेसर अनुराग. Professor Anurag, are you hearing me? Yeah, I can hear. Yes. Professor Anurag has more than 3 decades of diverse experience in leadership roles in academic and industry. He has worked in leadership positions in software product development, telecom, IT, steel, power, research-based innovative natural food products development, apart from social service and higher education in technology and management, as well as he is managing trustee of India Educate Trust. He has taught computer science and engineering for more than a decade at Indian Institute of Technology, Roorkee, formerly University of Roorkee, NIT, Kurukshetra in India, and worked at Computer Science Department in Hong Kong. Hong Kong Universities of Science and Technology, teaching and learning in his passion and work with youngsters to realize their potential. His areas of interest include cloud computing, mobile computing, augmented and virtual reality, high performance computing, artificial intelligence, and neural computing, entrepreneurship, and mentoring. He has supervised more than 100 graduate students in these areas. He has been keynote speaker in many academic industry, national and international conference in India and abroad. He is a senior member of IEEE, member of ACM, and life member of ISTE and ISSE. He has been the Secretary Executive Committee IEEE Bangalore section. Now he is appointed here as a Dean of Science and Technology. So I invite Professor Anurag, please share about the next step in virtual artificial intelligence. Thank you, sir. Please. Good afternoon, and thank you very much, Dr. Vanda Tiwari, for the introduction. Thank you. I hope Most I'm welcome. clear. You can hear me properly. Yes, sir. Okay, thank you. Yes, Thank you. sir. So we have been talking for almost 2 days now about virtual education, and all of you know that the corona pandemic has forced us to go for virtual education, and students even from preschool to postgraduate and PhD are actually adapting to this new mode of education. But actually this is not really new. I started working in artificial intelligence in 1986, and I have worked on intelligent tutoring systems. And that was one of the reasons that I decided to teach. Okay, now coming back, we will see like how AI can help us in virtual education. UN has estimated that 69 million teachers would be needed by 2030 to maintain sustainable education goals. And we know that it may not be really possible. So we probably will have to go for technology. Apart from that, even today, the 260 million children and youths do not attend schools. And you know that these numbers are on the lower side. They will be much more because for obvious reasons. And if you look at global citizens, in youngsters, you will find only 14% complete their upper secondary education.
So if we really look at it at global level, even at India level, challenges are humongous. And this we are talking about just numbers. We are not talking about quality. All of you know there are a lot of surveys where they talk about quality, where class 5 student cannot even read or write at the level of class 1. That is one challenge. That is the challenge of numbers. Another challenge is that is inherent with our education system, or the present or current education system. Our present education system is assembly line education. It works like a assembly line manufacturing. Assembly line manufacturing is good for inanimate objects, like you can manufacture car very efficiently. Though manufacturing is also changing now, it is becoming customized and it is going to be distributed in future very soon. Already that movement has started. But if you talk about like assembly line education for human beings, it doesn't really work. And all of us know that we all are different. We learn in different way. Our interests are different. So assembly line education is actually very ineffective for human beings. People started using electronic, or like a lot of different technologies, using computers for education. But if you really look at it carefully, you will find that most of these like devices or programs or platforms are merely electronic page turners. Or like earlier speaker was talking about Swamparbha and DDH and all that. Concept is wonderful, but if you really sit down and watch those, and the reason is that people don't watch it because speaker is disconnected from the people who are attending those lectures for learning purpose. So there is a difficulty. And how do we like really look at it? Moreover, like what we are seeing as virtual education, it is nothing but extension of existing assembly line education to online. Like we are using Zoom, or you can use Google Meet or Microsoft Meet, and it is exactly the same what happens in classroom. And the concept is exactly the same, which is assembly line education. We really do not and cannot take care of individual students' interests and requirements. Then how do we solve this problem? And the problem is easier to solve if we can use technology. And one of such technology, or part of that solution, is artificial intelligence. So what is artificial intelligence? Artificial intelligence is a branch of science and engineering which is like mimicking or simulating human intelligence. So we produce machines which mimic or simulate human intelligence. We really don't understand fully about human intelligence, but a lot of progress has happened in last 50, 60 years, and we are making good progress on that. We understand it better than what we understood it earlier. And I'm sure you must have heard about artificial intelligence or AI or machine learning a lot today, because many of the things are now have applications, and we are using it in many of the like real life usage. Even for when you talk about like you type your Google Mail and it will try to complete your sentence, that is partially artificial intelligence. It is using that. Okay, so artificial intelligence is one of the disruptive technologies that can provide customized online learning, and it can offer like different learning experience for different users. So we will look at some of the like challenges, and then we'll see how AI can be used, or how AI can solve these problems. So one thing is personalized education. We know, like, we all are different, and we learn in different way. When we were talking about assembly line
teaching or education, we teach the same content, we teach at the same time, and we teach at the same speed, disregarding the learners. Probably AI can help in this. Another challenge is when we are talking about like online virtual, or we are talking about online computer based education, challenge is that learner doesn't know what he or she doesn't know, and it is the task of a teacher to find out what a student doesn't know, what is the gap in the knowledge, and how to address that, and that is to help a student learn that concept. AI probably can do or fill this gap. AI-based systems can identify what a student doesn't know, like it can diagnose, and it can build personalized study schedule that is tailored to a particular student's specific needs. So this will be a wonderful, lot of work is going on. Some of the systems are actually already providing these services, but in limited way. But I'm sure in next few years, things are going to change very fast. A lot of AI is going to come in like education. So, when I say education, I mean teaching and learning. So actually using AI, it is possible to create individual instructions. We can use AI for testing, and not only for instruction and testing, it can be used for feedback also. So the result of this is that we can have individualized learning experience, and we can identify gap in the knowledge of the learner and fill those gaps using AI. Another very interesting application of AI can be producing smart content. See, currently we have ebooks, we have a lot of digital learning material available online, and like earlier speaker talked about, a lot of open access or open source material available. A lot of material is available on YouTube and other platforms. Now the problem is we have a lot of material, and how do we use it? And it is difficult anyway. It remains, most of it remains like extension of the existing assembly line, but good quality material is available. So actually AI can be used to produce smart content. It can take the existing material, it can break it up into smaller parts and create the capsules which can be learned, and based on that it can diagnose and identify what are the concepts missing, and redo provide another learning material which can actually fulfill that gap in the learning. And I'm sure as we move forward, AI will be able to do much more. Is this pace okay, or I am going too fast? No, sir, it's okay. Very it's good. Okay. Another thing is that AI can be like AI and other new technologies can be used for visualization. You know that we learn faster if we can visualize things and provide real-time feedback. You know, feedback is important, and feedback has to be such which is positive, which is actionable. Like we can work on that. Just giving feedback doesn't work. So if AI system can identify what are the gaps and what we can do to fill that gap, provide us feedback on that, then it will be really helpful for the learners. Okay. Another area where AI can be used is it can automate routine tasks for teachers and learners. So there are a lot of tasks where we do grading, we do assessing, we reply to students. All this, many of these things can be automated. You know, like you must have seen most of companies and websites have a chat bot where you can type your questions and they will try to answer. But I find a lot of them are very limited, but a lot of work is going on natural language processing, and things are going to change. Can we ask Mr. Debashish Das to mute his mic, because he has been disturbing continuously, actually earlier also.
I'm Yes, sorry sir. to interrupt. Yes, sir. Madam, can we ask Mr. Devashish Das, or you can mute him actually if you have control. Probably he's not listening, but he is speaking. Is it possible? Okay. Yes, please. So please mute him. Okay, ma'am. Coming back, we talked about even tutoring can be done. Like we need not have a human tutor. AI system can tutor. And what we talked about when you are tutoring, the main object is identifying gaps and fulfilling those gaps based on individual requirements. So basically, system may be one, but it will be customized to each learner. So you would actually have a personal tutoring system for each individual user. The same system will behave differently for different users depending on their requirements. These AI-based education system can actually also be customized for providing students with special needs. Like they can be students with different kind of disabilities, and like whether it is visual or hearing or kinesthetic, these systems can be customized for taking care of individual or special student needs. Another thing is virtual mentors. I think most of us, those who come from teaching background, understand the importance of mentors, and mentoring is a very important task of a teacher to help students grow. And we can actually train AI-based systems to be virtual mentors, so they can understand scholars' need and give them instant feedback, which is actionable, which will help them. Okay. Another interesting thing is most of us, even sometime grown-ups also, are interested in playing video games, or we want to do like learn through video. And we can use like augmented reality and virtual reality along with the artificial intelligence, and that would help us or students to learn better, and it will make process of learning much more interactive. And what I have seen is the possibilities of using AR, VR, that is augmented reality and virtual reality, along with AI, opens humongous opportunities in teaching, learning, in training, in skill training, and it can reduce the cost of teaching, learning drastically. Probably I'll not talk about that in detail right now. But all those possibilities are there. Then another very interesting possibility where we can actually use AI and data science can create another dimension of learning. When a user or a student is learning online, system can continue to get feedback or data from the users, and data may include your facial expressions, so it can understand whether you are enjoying or you are not happy with the content, your pace, at what pace you are reading or you are watching video, how many times you stop, pause, or rewind the video, go back and then want to see whether you are looking at the captions or the video. All those things can be monitored, and all these data can be generated, and based on that, system can be customized. Not only system can be customized, actually system can be improved also, because through this you can analyze and understand where system is creating trouble for learners. And when you have a lot of your learners using the same system, you get a lot of data and you can improve your system. Similarly, like you can identify and find out whether teacher is speaking too slow or too fast, and system can send notification to teacher. Like right now, as I said,
we are using Zoom for online conference, and it is mostly one-way communication. And it is extension of our real conference. Nothing else has changed except that Perchance has been changed by video. But if we bring in all these new technology that I talked about, where I talked about AI, I talked about AR, VR, and talked about data science, you bring in, and then systems can change drastically, and it will help teachers. It will help students to learn much better. Another thing, another possibility that is there is you can create a platform which can be used at global level. So you create a AI based platform, probably in content maybe in one language, but it can be translated using AI and natural language processing, which can provide content to users from different areas in their own native language. And I'm sure you may be aware that some of the IITs are going to start their curriculum courses in native languages, that is mother tongue or language of that particular area. First one is going to be ITBHU or IITBHU now actually. So AI based systems can be used globally. They can be used everywhere. And AI speech recognition can hear a student, understand, and respond in their own languages, in their native languages. So what we see is there are humongous possibilities when we start looking at new technologies for education. Education is going to change completely. The current, what we are calling virtual education, is only the first part, where we are just replacing classroom by online video. But that is not the end, it is just the beginning. Yeah, I'm open to questions. You can please ask questions. I will try to answer a few questions. Thank you, sir. Any scholar wants any queries, और कोई भी प्रश्न हो आपका हो तो सर से आप पूछ सकते हैं, वो उन चीजों का समाधान करेंगे अपने तरीके से. One by one ask question. Hello. Okay, if there are no questions, no problem. You can email me. My email is anurag, ANURAG, @jjtuac.in. You can send me an email. I will try to respond as fast as I can. Sir, please repeat one time. Okay. My email is anurag, ANURAG, @jjtu.ac.in. I will write it in chat. Probably then. Thank you, sir. Okay. Now, thank you very much. Hello. Yeah, I think now Commodore Jahangir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So you please. Very clever. Next speaker is Commodore Dr. Jawahar M. Jahangir has taken over as Dean Faculty of Management and Commerce Law in JJTU. Prior to joining JJT, he was Professor and Principal School of Electrical Skills and Director Industrial Relation and BSDU, Jaipur. He has over 35 years of experience in academics, administration, technical management, repair, maintenance, and operations of electrical, electronic, and weapon equipment fitted on ships and submarines of the Indian Navy. Indigenization of indigenization, corporate social responsibility, diplomatic assignments, infrastructure project planning and execution, quality assurance, strategic planning, teaching experience of both engineering and management courses, training design, development and evaluation, as also working in a public sector undertaking. His academic qualification include BTech, MSc Engineering from RNAC, Maradon, United Kingdom, MSc Defense and Strategic Studies, Master Diploma in Business Administration, and PhD. Dr. Jahangir is Fellow of Institution of Engineers and member of City and
Guilds of London Institute. The various major assignments done by CMD Dr. Jangir in the past include Deputy Director General Planning DGNPV, Vishakhapatnam, Deputy General Manager Electrical Naval Dockyard, Mumbai, Deputy General Manager Human Resource Naval Dockyard, Mumbai, Director Quality Assurance DQA and DGQA, New Delhi, Director Fleet Maintenance IHQ, Ministry of Defense Navy, New Delhi Electrical Officer INC Gomati. CMD Dr. Jangir was nominated as one of the 25 leaders in India who have made a significant impact in lives of the poor and disadvantaged sections of the society whilst he was sharing the CSR program in the public sector undertaking in Mumbai. Also won CSR Excellence Award for Public Sector Enterprises instituted by Indian Chamber of Commerce. Now over to you, Dr. Jangir, please. Yeah, thank you, Dr. Vandana. Most welcome, sir. And I must also compliment you and the team from JZTU who have been responsible to organize this excellent seminar. In fact, I was fortunate to hear the last two presentations by the speakers from Ethiopia and also from BHU. And I must tell you that they were some of the finest presentations which I have recently heard. So coming to the online teaching methods and the opportunities and the threats and what we have learned since March, early March, and how the world actually has changed. And you would appreciate that right from the time the World Health Organization declared COVID-19 as a pandemic, I think has brought numerous amount of threats and opportunities to the humanity as large. I think it changed the way we live, we operate, and do our activities, business, as also the educational activities in which I think all the participants are presently involved. And I think it has also forced the universities to come up with some sort of crisis response. And I think this particular online seminar on Zoom, probably these were not the case earlier. This could have been a physical seminar in one big conference hall, and you would have been physically hearing. But for last about 7 to 8 months, I think this is the thing which is actually the norm. And it is, I think it is going to be the new normal in the years to come. What is interesting is that it has also brought all the families together, and suddenly we found that we have a lot of time, for each other, specifically the close people staying in the same house. It also showed that you really don't require too much of money to live, I would say, comfortable and a happy life. And of course, it gave rise to a lot of new business opportunities. Now, coming to education per se, I think it gives you a huge amount of flexibility. It is, I would say, learn on the go, and you could pace your learning. It's a self-pacing, and you are most of the time on your own. But it does reduce the social contact. But this flexibility, the self-pacing, learn on the go, you're on your own, they also come with huge amount of negatives. It also resulted in digital transformation of a very large number of services and business, which hitherto was not thought of. And universities being one. Because when you talk about online learning, everybody felt that this is not the way that the students can learn. Though a very large number of foreign universities, and which I think Dr. Jain, the previous speaker, actually brought up about the online courses which the universities are offering. And in fact, the online courses
the degrees which are being awarded by these universities had almost equal weightage. But it is only the pandemic which has brought that online education is a reality, and all these brick and mortar institutes which are flourishing all over the world and India probably may not flourish as much as they have been in the past, because a very sizable amount of educational activities are going to be shifting online, specifically where the hands-on training, the practical aspects of training is not involved. Though physical learning has got its advantages, and obvious, we are aware, but when you see the economic model of this particular thing, a very sizable portion of what we learn is going to shift to online. It makes a lot of sense for us that we are actually geared up to play our part and realize the benefit of this particular online education. You would also see a very large number of IT companies who are actually who provide the technological platform for this online education have suddenly realized that large number of buildings which they had to house thousands of employees at one place, they suddenly are no longer required, because they felt that the productivity of their companies actually has really not suffered, except the people they required on site for day-to-day functioning on servers and other equipment. Otherwise, as far as development of the software was concerned, they remain as productive. And if you see the major IT players, their actually losses have not been as much as it has been in another sector. So this is going to actually open a new area of doing business for them. Interestingly, I think majority of the participants in this, I believe, are PhD scholars, and some of course, maybe the faculty also. And this particular online education actually has also opened a lot of research areas. And if some of you who are still in the beginning of your PhD registration, I think it does provide you some food for thought to actually opt for research in this particular area, and is going to be quite a bit in demand in the years to come. And basically what you need to do, because I think you have been now participating in the online education, and you know the pains. What are the pain area in which you need to work on? Be it the technology, be it the attention, be it the quality of presentation, be it ensuring the focus of the students, be it ensuring the workload on both the students and the faculty, and proper management. So there could be whole areas on which actually you could work, like models to accommodate contemporary changes in the online learning. You can review the entire process, because this has been a crisis response for all the universities. You review 10 or 15 universities as to how they have gone about resorting to online education, and which model has been effective. And you can come out with a very suitable and appropriate model which could be adopted by a very large number of. You could also think of designing some kind of scalable and personalized online learning models, because this will also help. In fact, interestingly, there are a very large number of companies which actually are earning millions of dollars and in fact become unicorns, just the way they have designed these particular models for learning. So this is a great opportunity for the researchers as such to actually focus on these particular areas. Other interesting thing is, the people, some of you who are the technical graduates or technical postgraduates,
the technological innovation is going to be a big player. For example, this particular the platform which we are using for our international conference, it does not belong to India. Okay, it really doesn't belong to. And we being the leaders in matters IT, we are yet to have our own Indian version of Zoom or Google Meet and things like that. So I think this offers a great opportunity. And as Prime Minister Narendra Modi actually had announced that we need to develop this, and he was ready to award a huge amount of prize for this. But notwithstanding the prize, for the technical graduates and postgraduates, specifically belonging to the computer science and IT, this is an excellent opportunity. And whatever software which you develop, and I'm sure with the kind of intelligence and the knowledge base which is available in India, I think you do a lot of good to the humanity. In fact, almost 15 to 20% of the population actually belong to India. And you see the size of business actually you will have. So actually COVID-19, I won't really call it blessing, but it has come out with indeed a lot of business potential, both for researchers and the technological innovations and things like that. But I've been personally involved, directly taking classes of a large number of students, and I would only say that taking classes online is, I would say, far more difficult than in the classroom with the chalk and blackboard, because it requires huge amount of planning and design of instructions material, the PowerPoint presentations, and how the complete flow of your talk is going to be. Because here, when you are in the classroom, you have the students face to face, and if the students don't understand, as a teacher, you will be able to know it immediately, but just by looking at their facial expressions. But there, it is not, because the video, you might keep it on, but it's not possible. So here you have to think that what possible doubts the students might have. All those doubts have to be actually incorporated in your presentation, that the doubts are clarified as you speak. Because see, what is also interesting, this online particular education system also gives an opportunity for the students to log in with their particular photograph, and the teacher knows that the students are available, but the student has logged in, but he's not there at all. So you have to indeed work on making these particular lectures so interesting that the student actually waits for your talk. So that comes with a huge amount of responsibility on the teacher. What my experience of 5 to 6 months has also taught me that you could keep the chat box open. Like I was just seeing the previous particular talk that they said there's no PPT and all. I also don't have a PPT, but that is besides the point. But the kind of doubts which those particular students have, if that particular doubts actually you continue to note, then you can model and modify the progression of your talk, and that really helps. Other thing which really helps is continuous assessment. Whatever you have done for about, let's say, 30-35 minutes, at the end of the talk, you have to well design some kind of questionnaire which you can actually administrate online, and they answer. Google Classroom and all these kind of platforms, they do provide such particular facilities, and the assessment is online. The students also can know that how many answers, how many questions they have answered correctly. And as a teacher, it is also important for you that if majority of the students have not answered, that you need to seriously look at the way the classes are being conducted. Continuous assessment is extremely important for the teachers who are actually taking classes. Either you gave same day or in 1 or 2 days, and check
And of course, those answers actually have to come on pen and paper and not online. With online, actually, whatever you may say, there are chances for the students to help each other and, come out with almost the same answers with some minor changes. But really, we end up losing. So actually, the study, some researches have actually taken places, not of the PhD type, just to take response from the students. What they have actually found that keeping the students motivated actually is one of the most important responsibility of the teacher actually who's taking the online class, because the boredom actually reportedly sets in. There is certain amount of stress, and most importantly, there is a lack of focus on the part of the students. Now, this is not what I am saying on my own, but this is through a large number of research, not in India, but abroad, which have taken place. Because actually, you are in your bedroom or in your drawing room or wherever you are, so there is a tendency for you to drift away. But when you're in the class, of course, there also there's a possibility, but the possibilities are lesser. You are actually continuously under the observation of the teacher, or the students are in the under the observation of the teacher. So there are chances of lesser chances of you drifting away from the class. And of course, as teachers, we need to spend some few sessions to make all the students aware of the technology which is involved, or how to operate that particular platform. Because assuming that everyone is tech savvy and they will understand, then I think a lot of effort which you as a teacher actually put in actually goes waste. Then we also have all the students, though slowly it is fading away. A lot of people actually still feel they are doing online, will have some validity or not validity. Of course, those particular thoughts actually are going away, but you need to actually surprise the student that that is not the case. In fact, we in India have already started working, not the way that the foreign universities have gone about it. But for example, you see IITs were tasked a few years back to prepare lessons, on a lot of subjects, and hosted on their IIT website, NPTEL. You must have, I'm sure many of you would have used that. And I did audit of a very large number of those particular courses pertaining to electrical engineering, and they are very, very interesting. In fact, if you are really focused and you are sincere on that, and so also, of course, has to be the case with the students, then it is possible to really master the theoretical concepts and theoretical content. But in engineering, I think you also need to have fair amounts of hands-on training. And because without that hands-on training and hands-on work, you really don't become an engineer. Because engineer, by definition, means not theoretical engineer, but practical engineer. So, these are the particular thing. And of course, on part of the student, there's a huge requirement on their self-discipline. So I think the students have to be continuously coaxed and reminded, and to remain self-disciplined and focused and motivated. So these are additional responsibilities when you are actually conducting online classes. How long these particular online classes will go on, because there is one pandemic and you don't know what is in store for us. So it makes a lot of sense for all of us who are in the field of education, master these particular arts and make best use of it, because ultimately we are responsible that the next generation actually is fully equipped, and it has got a lot of moral responsibilities on our shoulders. So having said that, now I think it's almost becoming 4:35. I will take some 10 to 15 minutes if it is okay with Dr. Vandana. Dr. Vandana, yes, sir. If any scholar of the CJJT University wants any queries or questions to Dr. Jahangir, sir, please
ask him. No, Dr. Vandana, can I take 15 more minutes? Yes, yes, sir, very carefully. But yes, if any queries of the scholars, please raise your hand and ask to the sir. Sir, explain you 1, 2, 3 questions. And if any more questions, then email on his email ID. He then definitely respond you. Yeah, Vandana, the few things since I believe I think majority of them are PhD scholars. Yes, sir. Yes, sir. I just wanted to share some of my thoughts, and they are nothing to do with. Please आप चैट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी दे दे ताकि यदि स्कॉलर्स को कोई भी दिक्कत होती है तो वो आपसे कांटेक्ट कर सके थ्रू. So my email ID is vandana.jawahar@jztu.ac.in. Sir, with spelling because any एक भी digit इधर या एक भी word. Jawahar is the same spelling of Jawaharlal Nehru. Jawahar, Jawahar. Yes, sir. Jawahar @jztu.ac.in. Okay, sir. Thank you, sir. Now that thank you, sir. Most आपने बहुत अच्छे से और कम समय में चीजों को समझाया. बहुत धन्यवाद सर आपका. आपने अपना अनमोल समय भी हमारे साथ साझा किया. तो ये हमारी एक बहुत अच्छी बात रही हमारे स्कॉलर्स के लिए. अब हमारे साथ ये Thank you. Thank you, sir. तो अब हमारी बारी आती है स्कॉलर्स की. Good evening, ma'am. एक मिनट, अभी हमारी बात शुरू होने दीजिए. हम आपके साथ बने रहेंगे पूरे 6 बजे तक, ठीक है? तो हम सबसे पहले अपना रेज हैंड कीजिए. मैं लिस्ट में जैसे देखूंगी उनको अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए नाम अनाउंस कर दूंगी. रेज योर हैंड. चित्रा सेन गुप्ता जी. Yes, ma'am. जी, आप अपना जो भी इस विषय से, चूंकि यह मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस है, तो आप जिस भी विषय से हैं उस माध्यम से चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमारे साथ अपने विचार साझा कीजिए. Thank you, ma'am. I'm sharing then. Yes, sir. Yes, please. Okay. I think you are from nursing department. Yes. I'm from nursing. My registration number is 24520040. Hello. Yes. Registration number 24520040. Just a minute. 52 00 40. Okay. Now continue. My screen. Yes, you can see my. Yes, please. Okay. Yes, ma'am. Okay. So, good evening, everyone. It's my proud privilege to present my paper in this international conference. Thank you for all the organizers. Okay. One thing remember, after plagiarism we publish this. Okay, तो आप बीच में बिल्कुल questions नहीं करेंगे कब आ रहा है कब नहीं आ रहा. हम बारी से जैसे plagiarism हो जाएगा उसके बाद हम आपका पेपर प्रेजेंट जो आप कर रहे हैं उसको हम पब्लिश करेंगे. ठीक है? तो इसके बाद आप किसी को भी कॉल करके आप नहीं पूछेंगे, वेट करेंगे चीजों के आने का कि कब तक वो पब्लिश हो रहा है. ठीक है? क्योंकि बहुत सारे पेपर्स हैं और हम सबको एक साथ अलग-अलग ग्रुप्स में निकालेंगे, है ना? Okay. का ध्यान रखेंगे. जी. Okay, ma'am. चित्रा सेन गुप्ता जी. Yes. So today my topic is experience of conducting objective structured clinical evaluation OSCE in an oncology setup for postgraduate students. It's the impact of new normal in nursing education. The unprecedented impact of COVID-19 global outbreak are indeed ushering the educational systems to a new normal period in human history. As we approach the new normal in the post-COVID-19 era, there is a definite need to consider education as a new in the light of emerging opportunities and challenges. It has been discussing since yesterday all the aspects. And there is a need to think education in the new normal post-COVID-19 era through the perspective of the curriculum vitae. Since past 9 months, COVID-19 pandemic has changed the life of human beings. Nursing education also experienced the change.
Being the practical oriented subject, conducting the examination, especially the practical examination, was nearly impossible due to this pandemic. And OSCE became the method of choice for practical examinations of professional courses. Last, Chitra, yes, ma'am. your PPT is और आप उसे आगे बढ़ाइए, सिर्फ हम पिक्चर देख पा रहे हैं, एक पिक्चर सिंगल। PPT आप शेयर करना चाहती हैं तो कीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर नहीं नहीं, हम शेयर करना चाहते हैं मैम। हाँ जी। You are able to see now? Only the picture is one school, Ruby from. No, something. no. I'll just say, 1 second. Let me. Yes, please. Can you see now, ma'am? Just a minute, searching. There is searching. Yes, please. Yes, sir. Is it visible now? Yes, this is visible. Okay, thank you. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So today I'm going to present on experience of conducting objective structured clinical evaluation OSCE in an oncology setup for postgraduate students. This is the impact of new normal in nursing education. As we all know, the unprecedented impacts of COVID-19 global outbreak are indeed ushering the educational systems, and that's why we had to read the education in the new normal post-COVID era through the perspectives of curriculum studies. Since past 9 months, COVID-19 pandemic has changed the lifestyle of human beings, and nursing education also has experienced a change. Being the practical-oriented subject, conducting the examinations, especially the practical examinations, was nearly impossible due to this pandemic. So OSCE became the method of choice for practical examination of professional courses. Even the past few months, Indian Nursing Council, State Council of Nursing, and West Bengal University of Health Sciences have evaluated the pandemic situation and selected OSCE as the method of practical examination. So today, the purpose of this paper is to discuss how a constituent college under West Bengal University of Health Sciences has been designing and conducting OSCE. The discussion will be relevant to nursing faculties who use OSCE as a means of clinical skills assessment. Coming to the OSCE, what is OSCE? As per Bartfay, OSCE is the gold standard assessment strategy for all the healthcare professionals and with the enhancement of the quality. It is an established, reliable, and effective multi-station test for the assessment of practical professional skills introduced by Hardin in the year of 1979. It is a well-designed and implemented OSCE can provide students with opportunities to demonstrate interpersonal and interview skill, problem-solving abilities, teaching and assessment skill, and application of basic clinical knowledge. So the aim of OSCE mainly to assess the clinical competency of the postgraduate nursing students, standardize the assessment process, identify potentially weak students and students who can progress the next session. Coming to the standard setting and implementation, as we know, OSCE is a multi-station test and it is a score-based, so we have to decide a cut score. So the cut score is taken as the average of the judgments. And in the first year OSCE, there were 5 individual stations what we have set, lasting 15 minutes each, and they include mainly the basic and advanced, both nursing care. Basic care means the back care, back massage we have selected, lung auscultation we have selected, advanced care we have selected the stomach care, CVAD central venous access device care, all those things. So for the first year there were 5 stations there. For the second year, final year, we had 4 stations. Now the preparation of the students. Now there are simulated patients. We had used only mannequins alone as a simulated patients in our exam. Examination time, we have set, we have during vetting the time for each station
was determined. We Agreed. have determined the 15 minutes for each stations, and we had a mock run of the stations were conducted to check if the tasks are achievable within the specified time or not. And all the postgraduate students were made aware of the format of OSCE. The information was given during both briefing sessions, include the instructions given regarding date and time of the examinations, time allocation for each station, and the type of interaction to be expected. On the day of OSCE, the day of final exam, the students were checked into a comfortable waiting area, and they were also briefed on the nature of the examination by the coordinator. Students were advised that they must present for the examination in uniform with a valid student identity, with cards and with drug book and all necessary clinical files. Preparation of the assessors, mainly we had done the vetting and creating marking sheets. Vetting remains the team was responsible to develop a blueprint. The team was also responsible for the formulation of the mark sheets, examiners' instructions, and a list of available equipments. For creating marking sheets, students were scored using a predetermined mark sheet, which is developed well in advance. Each mark sheet was accompanied by specific examiner's instructions. On the day of examination, the examiners arrived early enough to allow familiarization with their station mark sheet. Examiners were fully briefed on the nature of the examination, the number of stations, the pass score, and the compensatory aspect of the examination. An internal examiner was identified for the examination day. Usually it is the person in overall charge of the examination room and has familiarity with each of the tasks that can step in at each station if required. So we have taken the student feedback and evaluation post-exam. So as per the feedback of the students, we have divided in as per SWOT, strength, weakness, opportunities, and threats. It came that OSCE is objective, authentic, there is a clarity of system, there is unambiguity, reliable and valid. This provides candidates feedback. It overcomes bias of traditional examination. It ensures right coverage of curriculum. It has got the ability to evaluate in real time. It has a nature of uniformity in assessment. It is an innovative learning experience for the students. Weakness, it is time consuming in preparation, requires large area and space. It has bit complexity in the exam or by holding the exam. The accelerated stress, the students, and high cost in the conduction of exam. Opportunities to conduct OSCE to replace the traditional examination system. Let it be for any reason. Implementation successful and widely accepted in other specialities, and it ushered in objectivity in assessment at the expense of subjective. Threat remains opposition to the idea of revamping traditional system with OSCE, delay in active participation and brainstorming, which is mandatory for OSCE, negative mindset of feeling of threat. So my recommendations is that attention must be given to the time of OSCE stations. Students' orientation period about OSCE should be planned to familiarize the students with OSCE, and developing OSCE committee from nursing, that is very important. If we are going to go with OSCE, we never know how long this pandemic will persist. Conclusions, we conclude that the OSCEs can be used most effectively in nurse undergraduate curriculum to assess the safe practice in terms of performance, and even the postgraduate curriculum of psychomotor skills, as well as the knowledge associated with the application. Chitra Sen Gupta. Thank you. Yeah. So mine is over, ma'am. Thank you. Thank you. Now, Sambhaji, 23121809 Sambhaji. Yes, madam. Yes, please. आप अपना presentation दीजिए. Okay, okay.
यदि और भी स्कॉलर्स अपना प्रेजेंटेशन आज देना चाहते हैं, प्लीज रेज योर हैंड. ओके, नोबडी. यस, संभाजी प्लीज. यस यस मैडम, पीपीटी शेयर करो. यस. Name is Sambhaji Valis. Registration number 2312181097. मेरा जो सब्जेक्ट है इंटरनेट की सूचना स्रोत एवं सेवाएं. पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों का सर्वोच्च ध्येय पाठकों की सूचना आवश्यकताओं की संतुष्टि करना है. पाठकों की सूचना आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संदर्भ एवं सूचना स्रोत परम सहायक है. सूचना सेवाओं के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाता है. संदर्भ एवं सूचना स्रोतों में विविधता है. आज ये मुद्रित संस्करण के साथ साथ सीडी रोम तथा ऑनलाइन भी उपलब्ध है. इस दशक में ये सूचना स्रोतों का संकलन अधिक हो रहा है. संदर्भ में एवं सूचना स्रोतों की मुद्रित संस्करणों का प्रकाशन निरंतर घट रहा है. इंटरनेट क्या है? इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्कों का वैश्विक नेटवर्क है. इसमें 2 कंप्यूटर से लेकर हजारों कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं और वे कुछ नियम का अनुपालन करते हैं, जिसमें हम प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं. कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ जोड़ दिया जाता है तो वे आपसे संप्रेषण एवं सूचना का आदान प्रदान करता है. इंटरनेट नियंत्रण क्या है? इंटरनेट का नियंत्रण एक स्वामित्व किसी एक व्यक्ति का एवं संगठन का नहीं है. इसका जन्म एक विकास बहुत खुलेपन के साथ हुआ है. अलाभकारी नॉन प्रॉफिट संगठन जैसा इंटरनेट सोसाइटी 1992 में हुई. एक बोर्ड का चुनाव करता है जो इंटरनेट के प्रौद्योगिकीकरण के उसके निदेशन का प्रबंधन करता है. इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार है. इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड है. इंटरनेट एड्रेसेस है संगठनात्मक डोमेन अथवा अभौगोलिक परम डोमेन है, जैसे कि .com, .education, .government, .net, .org ऐसे असंख्य साइट्स का इंटरनेट एड्रेस होता है. जैसे कि भौगोलिक डोमेन भी हो सकते हैं. इसमें EU, ऑस्ट्रेलिया, CA, कनाडा, JP, जापान, इंडिया. इंटरनेट पर उपलब्ध सेवाएं एवं सुविधाएं जिसमें कि ईमेल आईडी है, ग्रोफर है, टेलनेट है, फाइबर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब, खोज इंजन, फेसबुक. और इसमें निःशुल्क ईमेल प्रदाताओं की सूची भी है. उसमें याहू, हॉटमेल, 123india.com, google.com. इंटरनेट के ये सुप्रसिद्ध खोज इंजन भी इसमें पॉपुलर हो रहे हैं, जैसे कि गूगल, अल्टा विस्टा, इन्फोसिस, लैकोस. याहू का पूर्ण रूप है हेराजिकल ऑफिशियल ऑफिस. अल्टा विस्टा, इन्फोसिस, वर्ल्ड वाइड वेब जैसे कि असंख्य इसमें आ जाते हैं. वेब सर्वर, कंप्यूटर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर सेपरेशन नेटवर्क. वेब ब्राउजर की अनुमति प्रदान करता है. 2 प्रमुख वेब ब्राउजर का प्रकार नेटस्केप, कम्युनिकेट, इंटरनेट एक्सप्लोरर. इंटरनेट पर उपलब्ध विभिन्न संसाधन जैसे कि विश्वकोश है, अधिनियम एक्ट से ऑनलाइन कैटलॉग, ऑनलाइन चित्रावलिया, ऑनलाइन प्रलेख वितरण सेवाएं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज, ई जर्नल्स, ई बुक्स, ई प्रशासन, ई बुक शॉप, ओपैक, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, लाइब्रेरी वेबसाइट्स. ऐसे बहुत सारे साइट्स इंटरनेट पर उपलब्ध है. ई जर्नल्स, ई बुक्स, डाउनलोडेबल ई बुक्स,
web accessible ebooks, ebook readers, print on demand books, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स के प्रकार टेक्स्ट बुक्स, पिक्चर बुक्स, टॉकिंग बुक्स, मल्टीमीडिया बुक्स, साइबर बुक एक्सेट्रा। वर्तमान में इंटरनेट पर लगभग 50 लाख से पेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित है। यह परंपरागत मुद्रित पुस्तकों का डिजिटल संस्करण ही है। इलेक्ट्रॉनिक बुक शॉप में amazon.com, Amazon UK, TSO ऑनलाइन बुक शॉप, DK एजेंसी इंडिया, ऐसे बहुत सारे यह ग्रंथालय की ई ग्रंथ बेचने की सुविधा इसमें दी गई है। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस एंड कैटलॉग, डिजिटल ग्रंथालय की विशेषता है फ्यूचर ऑफ लाइब्रेरी। उद्देश्य भारत के विभिन्न ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों को आपस में जोड़कर उनके बीच एक नेटवर्क को विकसित करना, सूचना सेवाओं की क्षमता को उन्नत एवं विकसित करना, ऑनलाइन संघ सूची का निर्माण करना, सभी ग्रंथालयों में समरूप मानकों के उपयोग पर बल देना, ईमेल, कॉन्फ्रेंसिंग आदि के द्वारा वैज्ञानिक संप्रेषण का सुगम बनाना आदि हार्डवेयर घटक जैसे सर्वर साइड हार्डवेयर कंपोनेंट, सर्वर, निवेश युक्तियां, स्कैनर, डिजिटल कैमरा